Well, cricket in Pakistan and India is one of the things that unites the two countries in a way. And in the SNS Cricket Diaries podcast, we have been fortunate to have a few Pakistani people associated with cricket who have been able to give their point of view from across the border. Or iske saath, with this cricket podcast, the journey has gone on. Today, also, I have a very special guest from across the border who has played cricket at a very decent level and is a passionate cricket person. I have with me today Noorish Khan from Pakistan. Welcome, first of all, Noorish, to the SNS Cricket Diaries podcast. Thank you so much, Siddharth, for giving me this opportunity. I'm thrilled to be here. Noorish is the founder and captain of the girls' cricket team at her college, Credo College. She initiated Yes. the girls' cricket team at her university and plays cricket at a league level. She was among the top 20 contestants of the PCB Voice of Pakistan cricket commentary competition in 2022. Noorish was the only girl from her city and province as a whole to be selected among a pool of tens of thousands of contestants for that competition. She holds the honor of portraying her talent of commentary in front of the legendary Mr. Ramiz Raja. Noorish has also played in tournaments like Khelokhavateen organized by Khelokricket. She was the captain of Team Pit Smashers in 2021 season and currently is the captain of the team Khelo Strikers in this year's season. She is an all-rounder but was originally a batter who evolved into an all-rounder. So I think with that kind of a CV and an introduction, which is so impressive, Noresh, it's an absolute honor to have you on our show. तो सबसे पहले मैं आपको बहुत ही thanks कहना चाहूँगा that you've been able to come. So thank you once again. No, not an issue at all. Thank you so much for having me here. Okay, great. So the honor is ours, Noresh. तो Noresh, सबसे पहले to take the conversation, to start the conversation, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा that tell us a little bit about your journey in cricket, how it started, and of course, मैंने intro में काफी आपके बारे में बताया, but I would like to hear from you some of your achievements in cricket. Oh, okay, sure. So, cricket for me has always been like a second language to me. Like, merely cricket is like I have been passionate about two things in my life, like overly passionate about it. One is cricket and the other is medicine. So when people ask me what cricket means to you, I say it's my identity because and I really mean it. And uh, इसमें सबसे बड़ा रोल ना होता है कि आप जिस इन्वायरमेंट में ग्रो अप करते हो ना उसमें it has a huge role to play. Like as for me, the environment my house is like really inclined towards cricket. Like the whole family is cricket enthusiasts. So I grew up in that environment, and then obviously as a Pakistani, as an Indian, uh, you have a separate bonding with cricket, because cricket is not just a game to you. आपके लिए वो फिर एक गेम नहीं रहता क्योंकि then because क्रिकेट के अंदर you have the highs the lows और आपको पता नहीं होता लास्ट बॉल तक मैच किस तरफ जा रहा है. अभी रिसेंटली हमारा पीएसएल हुआ, उसमें देयर वर सिचुएशंस के जब हम प्रिडिक्ट कुछ नहीं कर पा रहे थे कि यार इस मैच के क्या सिनेरियो होगा. सो दिस इज व्हाट आई लव अबाउट क्रिकेट एंड दिस इज वन थिंग that in uh, enthralled me into pursuing it. इसके अलावा I have started playing cricket at a very young age, like I would say, because and by the way, by starting I mean कि वो age जब मैंने like cricket खेलना शुरू किया था, ठीक है, तो it was like 9 to 10 years of age. I used to play school में हमारे हमारी like जो team होती थी उसमें obviously because at that age वही जो access था तो उसमें I used to play there. उसमें आई यूज्ड टू प्ले देयर. उस पे मुझे मुझे पता लगा कि मेरा जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है दैट्स बैटिंग. तो that's when I figured out that I am a batter and I can be a good batter. That's when I like started working on batting. Then I used to watch a lot of cricket क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहे होते थे और ये सब हो रहा होता था. But I would like to mention one thing here. There was this one match कि जिससे मेरा जो एक एक होता है ना कि एक मैच होता है जो आपको वो कर देता है कि नहीं यार this game is like बिल्कुल आपका इंटरेस्ट है पे कर देता है. So it was a 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल फॉर मी कि जब वो मिसबाह उल हक ने वो थोड़ा सा बैक की तरफ शॉट मारा था एंड इट गॉट कैच. वी वर प्लेइंग इन सेमीफाइनल अगेंस्ट इंडिया. सो I, या I इट think वाज you're talking about the 2007 T20 World Cup final. no, it was a 2011 वर्ल्ड कप. आई Uh, रिमेम्बर दैट जिसमें सेमीफाइनल. जिसमें जो आप शॉट बता रहे हैं मिसबाह उल्लाह का जो उसने पीछे मारा था एंड कैच हुआ था, राइट?
Yeah, Yes. yeah. So that was actually the 2007 T20 World Cup final, not the 2011 May. He got out while hitting a ball straight at long on. Kohli ne pakda tha wo catch, in which he was Yeah. also the last man out in that match as well, by the way. So Yeah. maybe shayad you Yeah, got. I It's got okay, it confused, doesn't but matter. yeah, it was that match. It was that match for Okay, me, in okay. which because we were like so into कि हम लोगों ने कहा था कि नहीं यार हम पहुंच जाएंगे सर इस बार पहुंच जाएंगे, but then हम लोग उस मैच की वजह से we got out of the tournament. So it was that match for me कि जिसने मुझे वो किया कि नहीं, I like cricket is like really. So that is when I like वो, uh, आई लाइक गॉट रियली इनटू क्रिकेट. तो फिर मैं खेलती तो वैसे भी थी बचपन से, क्योंकि मेरा भाई भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है, देन मेरे कजिन्स हैं तो ये, और फिर फैमिली में ने लाइक सपोर्ट भी बहुत किया है कि इट्स लाइक they always supported me in every in at every point कि नहीं अब आपको खेलना है तो लीग, जैसे मैंने बताया था कि आई प्लेड इन लीग क्रिकेट एंड स्टफ, तो उसमें जाके इधर लाइक जाओ एंड बेटा गो एंड प्ले एंड डू व्हाट यू वांट. सो एक तो फैमिली की सपोर्ट भी बहुत मैटर करती है, one thing. Then second of all, I grew up watching Ramiz Raja commentating, right? He has always been my idol. Like I, एक ऐसा बंदा था जिसको आप आइडियलाइज करते हो. So if for me it was Ramiz Raja because I grew up watching him commentating and stuff in matches and stuff. So I was like यार if I don't get to be a player, अगर मैं कभी प्लेयर कभी प्रोफेशनली कुछ होता है, अप्स एंड डाउन हो जाते हैं, अगर मैं कभी क्रिकेट में एज अ प्लेयर नहीं जा पाई तो मैं एज अ कॉम्पिटिटर जरूर जाऊंगी, क्योंकि मेरा था कि यार मुझे कुछ ना कुछ करना है इस फील्ड में. बिकॉज एक आपका पैशन होता है, तो जब आप अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करते हो ना, तो यू आर ऑलवेज बाउंड टू सक्सीड. एंड दिस इज व्हाट आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड, और दिस इज, तो आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट एट द एज ऑफ 9 एट स्कूल लेवल. और उसके बाद आई यूज्ड टू टॉक अबाउट इट अ लॉट, मैचेस के बारे में एनालिसिस करना क्लास स्कूल में. आई वेंट टू एन ऑल गर्ल्स स्कूल बाय द वे. तो उसमें हमारे क्लास में लाइक ऐसे कोई मैच हुआ तो उसमें हमने बैठ के आपस में एनालिसिस कर लिया इसको, तो वहां से मेरा हुआ वहां से सबको पता लगे कि नहीं यार शी इज रियली इनटू क्रिकेट एंड स्टफ. तो वो एक एनालिसिस. देन उसके बाद मुझे मेरी जो अपनी लर्निंग बहुत ज्यादा बेहतर हुई, क्योंकि जब आप दूसरों से बात करते हो, उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू सुनते हो, तो आपको पता लगता है कि दूसरों का ओपिनियन भी पता लगता है. एंड पता लगता है कि यार दोनों साइड से आप जब देखते हो तो आपकी एनालिटिकल स्किल्स बेटर होती हैं. दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू. हम अपने भाई से बैठ के डिस्कशन करना, देन डिफरेंट एनालिटिक्स देखना. Recently, I'm watching Behram Kazi. He is a really good cricket analytic. He does really good cricket analysis. तो मैं उसको बहुत ज़्यादा देखती हूँ आजकल, because उसके analysis are really good. Then अभी मैंने I started a Twitter commentary in 2022. Yeah, the year that I got offered by Pakistan Cricket Board to in that Voice of Cricket competition. तो yeah, that. फिर स्कूल में आई यूज टू प्ले, देन ऐसी एनालिसिस करना प्रॉपर. देन उसके बाद व्हेन आई केम इनटू कॉलेज, तो अब कॉलेज का वाज इन्वायरमेंट वाज लाइक, वहाँ पे जो हमारे क्रिकेट के कोच थे, तो ही वाज लाइक के बेटा, बिकॉज आई वाज इनटू क्रिकेट, आई वाज लाइक, उन्होंने बोला कि आपको स्पोर्ट्स कौन से पसंद है, आई वाज लाइक इनटू क्रिकेट. So he was like, "Beta, we don't have a team for girls." So I said, the coach there was like, "But you can always create one." So it was, because एक नहीं, let's just face it, पाकिस्तान एंड इंडिया दोनों के अंदर ये एक चीज है, इन आई वुड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर के इट्स लाइक कि एक कन्वेंशन बना होता है कि क्रिकेट इज ओनली अ मेंस गेम, राइट? सो दीज वर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स की, क्योंकि आई यूज्ड टू अप्रोच गर्ल्स एंड आई यूज्ड टू टेल देम कि यार I'm taking this initiative. Let's just form a team over here. If they don't have one, it's okay. Because I always used to believe कि यार if you don't get a path, you should create one. And that is what you should do, right? So that is what I did. I mean, it was a lot of hard work. I'm not going to lie. मतलब मैंने लड़कियों को approach किया, उनको motivate करना, उनको convince करना कि यार आओ. लेकिन obviously I would be lying if I say it was all me, because obviously मुझे मेरे coach ने, मेरे teachers ने बहुत ज़्यादा backup किया. So the teachers at my college were very supportive, and they said, "Beta, go." And they were like always like very supportive. So मैं लड़कियों को approach करती थी, उनको कहती थी यार नहीं, let's just form a team, let's just do it, let's just make it happen, let's just break the barriers and stuff, let's just break the convention. तो लड़कियों को मैंने किया. Then I obviously मेरे coach की support से I formed that team and I led it for 2 years, the girls cricket team. और उसके बाद because they were girls, क्योंकि उनको कोचिंग वगैरह देना एंड देन स्टफ, तो उससे ना आप जब खेलते हो ना, तो आपकी एनालिटिकल स्किल्स भी बहुत अच्छी होती हैं. मतलब आप आई यूज टू वॉच, क्योंकि बचपन से ही ऑब्वियसली
क्रिकेट वगैरह देखती भी बड़ी हुई हूँ, तो एक जब मैं देखती थी आई यूज टू वॉच, क्या कहते हैं, जब मैं मैच देखती थी तो आई यूज टू से नहीं यार, एक दिन मुझे भी वहां पे होना है। हम्म। I want to be there. I want to do that for my country. Like मैंने भी आपको एग्जांपल दी मिसबा उल हक के शॉट की, जब we got out, तो that was really close to my heart. I was like यार we could have been there. I was like यार I wish I was there. Like थोड़ा सा होता है ना, बचपन से एक you Right. grow up in that environment. So yeah, Wonderful. that's how my journey for cricket started. Then उसके अलावा apart from my school and college, I play at a league level. Cricket को मैं as a league level कहती हूँ. And for that, Khelo Cricket is like that one. Khelo Cricket is basically an organization that vouches for women cricket. क्योंकि women cricket को लोग promote करते हैं, तो उसमें मैं अभी 2021 में भी I went there to play, and I was the captain of the team Pit Smashers वहाँ पे. और अभी इस साल भी रिसेंटली हम अभी टीम खेलो स्ट्राइकर्स की आई वाज द कैप्टन, और अभी भी आज भी उनका हर साल टूर्नामेंट होता है, रमजान रमजान क्रिकेट विमेन टूर्नामेंट होता है, तो Mm. उसमें टेप बॉल टूर्नामेंट होता है या, तो उसमें ही Okay. होता है. देन Wonderful. फॉर माय कमेंट्री, ऑब्वियसली क्योंकि मुझे बहुत शौक था क्रिकेट के बारे में बात करने का, कोई मैच होता था उसके बाद सबको पता होता था कि नहीं, नूरिश का एनालिसिस लाजमी रेडी होता है हर मैच के बाद, एक आर क्लास में एनालिसिस होता है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड हैव बीन देयर. और उससे जब आप करते हो तो आपको गेम की अवेयरनेस ज्यादा होती है. एंड आई बिलीव कि जब आप इस तरह से बात करते हो क्रिकेट के बारे में, एनालाइज करते हो किसी भी मैच को, तो जब आप खुद एज अ प्लेयर ग्राउंड में उतरते हो तो आपको पता होता है कि यार जब ये सिचुएशन आएगी, इस टाइप की बॉल आएगी, इस चीज की टेक होगा, तो आपको किस तरह फेस करना है. एंड वन रीजन वाई वाज, जब जो मैंने लीड किया टीम को, और मेरे टीममेट्स, माय टीममेट्स यूज्ड टू से दिस कि यार हाउ डू यू मैनेज योर प्रेशर सो वेल. आई वाज लाइक लुक, अगर मैं एज ए कैप्टन ही प्रेशराइज हो जाऊंगी तो मेरी टीम का क्या होगा. तो आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल देम कोई बात नहीं, एक वक्त आएगा. अब एक वी हैड अ मैच, आई विल जस्ट गिव एन एग्जांपल. एक हमारा मैच था, उसमें we needed how many runs? We needed 6 runs of the last over. Yes, we needed 6 runs of the last over. And there was this girl, and she was a very good bowler. वो like हमारी टीम की की बॉलर थी, one of the key bowlers. तो अब लास्ट ओवर था, we needed 6 runs. Obviously लास्ट ओवर आ जाता है, प्रेशर आ जाता है. So हमने obviously उसने that girl she bowled, और शुरू की 2 ओवर वाइड. सो दैट लीव्स अस विद 4 runs ऑफ 6 balls, क्योंकि शुरू की 2 तो वाइड चली गई. तो उसके बाद शी वाज लाइक, थोड़ा सा पैनिक हो गई कि नहीं क्या होगा. मैंने कहा नहीं, लुक डू वन थिंग, यू टेक 3 deep breaths, एंड क्या होगा कोई बात नहीं, हम लोग खड़े हैं, कोई क्या होगा, ज्यादा तो हार जाएंगे, इट्स ओके, बट ये तो होगा कि हम आगे आ रहे हैं. एंड शी टुक 3 deep breaths, और उसके बाद उसने उसको थोड़ा सा काम डाउन किया, एंड देन उसके अगली बॉल पे वी गॉट अ विकेट. एंड Mm. एंड ऑब्वियसली it was a breakthrough for us. Obviously उसके बाद जब एक विकेट आ जाती है ना, तो फिर एक जो एक पूरा सा एक पार्टनरशिप होती है वो ब्रेक हो जाती है. जब पार्टनरशिप ब्रेक होती है ना, तो पूरा टेम्परामेंट अगली टीम का खो जाता है. तो वी वोन दैट मैच. Wow. So yeah, so it's not one last thing I would like to add here. अभी तक की जो क्रिकेटिंग जर्नी का मेरा जो है, उसमें ऑब्वियसली देयर हैव बीन सिचुएशंस. मैं बार बार अपने कॉलेज का जिक्र करती हूँ, क्रेडो कॉलेज का, बिकॉज इट हैज प्लेड अ रोल अलॉट. मेरे स्कूल ने एएस स्कूल, आई वेंट टू एएस स्कूल बिकॉज इट हैज प्लेड अ रोल इन माय क्रिकेटिंग जर्नी के अंदर. क्रेडो कॉलेज हैज प्लेड अ ह्यूज रोल इन माय क्रिकेटिंग जर्नी एंड स्टफ. तो देयर वर सिचुएशंस के व्हेन आई वाज अ गर्ल, ऑब्वियसली अब मैं बैट लेके खड़ी हूँ, सामने से बॉयज खेलने आ रहे होते, तो दे वर लाइक, there was a situation, I would just be very frank with you. मैं बैट लेके खड़ी हूँ बैटिंग के लिए. There came a boy and he was like, मैं बैटिंग करती हूँ, he was like, it was very unconventional, क्योंकि एक वो बना हुआ होता है ना कि यार गर्ल्स कांट प्ले, एक होता Mm. है ना कि नहीं, अगर प्ले भी कर तो आराम से कराना. तो he was like, उसने अपने टीममेट को बोला कि यार इसको ना आराम से बॉल कराना. तो एक थोड़ा सा वो हो गया. आई हिट 6, आई एम नॉट इवन किडिंग, आई हिट 4 sixes in that over to that boy. उसने मतलब बहुत एक पेस पेस बहुत ज्यादा थी उस बॉल में, तो ही वाज लाइक शायद मैं ना कर पाऊं, बट देन आई प्रूव्ड हिम रॉन्ग. और एक ये इंस्टेंस थी, एक दूसरी इंस्टेंस थी व्हेन आई बोल्ड हिम आउट ऑन अ मिड स्टंप, सीधा Wow. सीधा. तो Wow. या, तो Amazing. I ये think दो. yeah, that's great, Noorish. और आपके आपकी आवाज में वो एक पैशन दिखता है, बिल्कुल झलकता है, जो which shows that you are very passionate and committed towards the sport. So that's wonderful. And of course, a couple of things. One is you mentioned about Behram Kazi, and in fact, he has been on our show. In fact, one of the first notable persons who thankfully agreed to come on our show. So yeah, it was great to interview him, and even I follow him quite closely as well. So yeah, he's one of the, I think, best rising stars in the podcast world of cricket. So that's amazing.
So, Yes. although this question is not part of the list of questions I had for you, Nourish, but मैं आपसे जानना चाहूँगा that who were your cricketing stars growing up? Who were the ones that you used to idolize when you were growing up? Okay. I used to idealize, obviously, it's a very conventional example, but I was I used to idealize Shahid Afridi from Pakistan. Mhm. And there was one more, and obviously there was one more. Yeah, it was Virat Kohli from India and MS Dhoni. I Mm. was like, MS Dhoni was, I used to saw that, I used to watch that man playing MS Dhoni. And I was like, what is this guy? Is Mm. there anything this guy can't do? Like I used to there were instances, there were a lot of matches in which what I liked the most about him was his timing behind the stumps. Like he used to catch the ball really fast and then hit it. Like it was very hard to it was very hard for that guy to uh, it was a rare instance when he would miss the ball behind the stumps. Yeah. So it was that. And then a few years back, I think they also made a movie on his Mm. life, Yeah. MS Dhoni. I saw that movie too, and then my respect for that guy was like increased super. So from Pakistan it was Shahid Afridi. Then I also grew up watching Shoaib Akhtar, Mhm. uh, Oh, Shahid Afridi. okay. uh, Because yeah. ye naam is like going far back, quite some time Yes. back. I thought probably You he were, so yeah, you're asking about the idols I yeah, saw when I was growing up, na? when you're growing up. So Okay, yeah, okay, great. that's those are the ones. MS Dhoni, then Virat Kohli, obviously. Virat Kohli is like literally currently the best cricketer, I would say. And currently, I would say Babar Azam. Yes. ओके ग्रेट ग्रेट सो नोरिश मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है दैट आपके आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस ऑफ कॉन्टेस्टिंग द पीसीबी वॉइस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट कमेंट्री दैट कंपटीशन दैट यू हैड जिसमें you won that competition, so how was the experience of that? I It was really good. Okay, so I didn't quite win that competition. I made it to the To the final top round. 20, yeah. Like, I Okay. was among the top 20 finalists. But Right. yeah, it was being selected from the as the only girl from my city and province as a whole was itself an honor. Mm. So it was actually a really good experience. So what happened was in 2022, it was actually that competition. I was just scrolling through Instagram and like through. I remember it was we had PSL 9, PSL, Pakistan Super League going on at that time. Yeah. So yeah, it was PSL, the seventh edition of PSL. I remember it very clearly. So I was like scrolling through, and there came a post on the PSL's Instagram page where they like उन्होंने बताया पूरा कि like इनका एक आप you have the chance to be the next commentator of Pakistan. And I was like okay, I was all ears. I was like okay, what should I do then? तो Mm. फिर उन्होंने पूरा उसमें स्टेप्स बताए हुए कि आप there was this 1 minute video कि Mhm. जिसमें आपको कमेंटेट करके उनको अपनी वीडियो भेजनी थी कि of you commentating on that. And I remember Ramiz Raja was the chairman of Pakistan Cricket Board at that time. So Mhm. that guy has taken a lot of good initiatives for Pakistan cricket, and I have a lot of respect for that guy because I've seen him in front of me, and I've seen the passion that he has for cricket. And I mean, he has like he can do a lot. But Pakistan cricket के लिए he can be of much benefit. So Right. I saw that I came across that post और उस पर मैंने देखा कि उन्होंने पूरा स्टेप्स बताया हुआ और ऑब्वियसली यूट्यूब की लिंक दी हुई कि ये वीडियो है आपको देखना है. अच्छा it was not easy. I wouldn't say it was any मतलब अब अभी शायद मेरी बातों से ही लग रहा है कि it was just a simple video आपको कमेंटेट करना है, but no, it was a 1 minute video. और इस 1 minute video के अंदर 5 seconds का क्लिप कोई और जैसे 5 seconds के क्लिप में एक मैच का दिखा रहे हैं वो कि मोहम्मद आमिर इज बॉलिंग और वो जो है वो बॉल हो रहा है, बॉल्ड आउट हो रहा है. फाइव Mhm. सेकंड का क्लिप उसमें था, देन फौरन से ही चेंज हो गया, अगले सेकंड पे वो छक्का मारता हुआ दिखा रहा है, वो सिचुएशन चेंज हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट मैच की. तो Mhm. इस तरह की है ना, बिल्कुल चंक्स में वो थी पूरी 1 minute की वीडियो और आपको उस पे थ्रू फौरन से जो है वो कमेंट्री करनी थी वन गो में. सो Right. इट वाज मैंने वन गो में की थी इंग्लिश कमेंट्री उसके ऊपर, बट ऑब्वियसली इट वाज चैलेंजिंग. आई वुड बी लाइंग इफ आई वुड से इट वाज इजी और इट वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड. नहीं, क्योंकि वो 1 minute की वीडियो में डिफरेंट चंक्स थे उसके, वो एक मैच नहीं था. एक मैच होता है तो आपके एक वो बन जाता है ना कि यार फ्लो बन जाता है कि नहीं आप करते आ रहे हो तो इट गेट्स बेटर. बट इट वाज तो या तो आई डिड दैट एंड आई वाज लाइक मैंने देन आई प्रेड, आई सेड कि अल्लाह करे हो जाए Mhm. because like I was very
into me. I was thinking कि यार अगर हो गया तो it would have been a good opportunity for me. Acha, just by the way, that opportunity came 2 days after my birthday, right? Oh, So wonderful. and yeah, and I turned 18 that year. And the irony is कि उसमें जो qualification age लिखी थी, that was also minimum 18. So I was like, okay, I'm in luck. Right. I said, Wow. okay, I'm in luck. So मैंने उनको फिर भेजी and stuff, and then I waited. I think after a day or two, I got a call from them, and I was like, okay. So they were like, हमने like आपको you have been shortlisted और आपको like लाहौर क्योंकि I live in Karachi, so they said कि आपको लाहौर आना पड़ेगा. Mhm. And I was like, okay. पहले मुझे यकीन नहीं आया, on a very serious note के okay. But then I thought about it और मैंने कहा कि नहीं. फिर उन्होंने कहा कि yes, आपको जो है वो आना पड़ेगा. So obviously they called us all there. और फिर जब मैं लाहौर गई वहाँ पे तो मतलब वो जब मैं लाहौर गई वहाँ पे तो आई मेट द अदर कंटेस्टेंट्स टू, दे वर आल्सो वेरी गुड और आई वाज द यंगेस्ट अमंग देम ऑल. और थोड़ा सा ये था कि बाकी सारे बहुत अच्छे थे. आई Mhm. डोंट नो इफ यू नो हिजाब जाहिद, द जनरल मैनेजर ऑफ मुल्तान सुल्तान्स. Mhm. शी इज No. करेंटली शी इज करेंटली द जनरल मैनेजर ऑफ मुल्तान सुल्तान्स. Okay. शी वाज उस कंपटीशन में Oh तो yes. वो. Okay. Okay. Now that you say so, yeah, I remember. I think she is the first woman to be involved at the management level in a franchisee league, right? Yes, yes, South Yeah. Asia's first. Yeah. And आई मेट हर और ऑब्वियसली उस वक्त सबका फर्स्ट टाइम था तो इंटरेक्ट कंटेस्टेंट से बहुत अच्छी बात हुई थी. फिर द स्टाफ, द पीसीबी का स्टाफ जो था, दैट वाज आल्सो वेरी वेलकमिंग और बहुत बहुत मतलब दे वर वेरी हॉस्पिटेबल. तो आई मेट हर एट दैट टाइम और मेरी उससे काफी अच्छी बात हुई. शी इज अ वेरी नाइस पर्सन. मतलब जैसे आप उससे कभी बात करो तो शी इज वेरी काइंड एंड शी वाज लाइक काफी मेरी उससे अच्छी बातचीत हो गई. तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल बिकॉज़ शी इज एन एग्जांपल कि वो वॉइस ऑफ क्रिकेट में तो यू माइट नो हर फ्रॉम दैट. सो फिर मेरी उससे देन क्या कहते हैं वॉइस ऑफ क्रिकेट में हमारा हुआ. देन हमारा मतलब फिर जब रमीज राजा रमीज सर से हमारे कमेंट्री का टाइम आया तो वी वर ऑल ऑब्वियसली क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी तो सारे थोड़ा सा एंशियस भी हुए थे, सब मिक्स्ड इमोशंस थे, यू Mm. नो. तो Mm. रमीज सर ही केम एंड बिफोर द द शो इवन स्टार्टेड ही उन्होंने टाइम दिया और टाइम देके हमें उन्होंने एक स्पीच दी. मतलब उन्होंने हमें काम डाउन किया, उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बताया, उन्होंने क्रिकेट के ऐसे जनरल बताया और उन्होंने थोड़ा हमें काफी काम डाउन किया. उन्होंने बोला कि नहीं आप लोग मतलब कर लेंगे, अगर नहीं भी हुआ तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. Right. अब व्हेन यू हैव पैशन यू विल गो अ लॉन्ग वे एंड स्टफ लाइक दैट. तो उन्होंने काफी मतलब उस शो से बिल्कुल स्टार्ट होने से पहले ही उन्होंने हमें काफी मोटिवेट किया एंड स्टफ. तो आई वाज लाइक दिस गाय इज अ जेम. तो उसके बाद फिर हमारा जब वो स्टार्ट हुआ तो उसके अच्छा भी इट वाज बाय द वे दैट शो, अगर आप कभी वो देखेंगे तो वो जो शो था जो हमें उसमें क्लिप्स मिले थे, Mm-hmm. दैट वाज अ वन गो शो. वी ओनली हैड दैट वन चांस टू प्रूव आवरसेल्फ क्योंकि वी Mm. हैड रमीज राजा इन फ्रंट और फिर हमारे पास कोई सेकंड टेक नहीं था. जो Mm. आप उस वक्त फर्स्ट टाइम में बोलोगे दैट वाज योर फर्स्ट एंड फाइनल. Mm. तो वो भी था. देन उसके बाद हम लोग को और जो क्लिप्स थे ना दे वर फ्रॉम पीएसएल, लेकिन वो पीएसएल के अंदर ऐसे ही थे बट दे वर लाइक एक क्लिप किसी और मैच का, दूसरा क्लिप किसी और मैच का, तीसरा क्लिप किसी और मैच का, राइट. तो Mm. फिर वो क्लिप्स वगैरह तो वो हमें सारा बता दिया गया. तो जब मेरी बारी आई जब जाने की तो रमीज वाज एक्चुअली वेरी इम्प्रेस्ड बाय माय यंग एज एंड द पैशन दैट आई हेल्ड एट दैट टाइम. बट या तो उस वक्त आई कमेंटेटेड एंड सबसे मेरे लिए सबसे बड़ा ऑनर ये था कि रमीज सर वाज इन फ्रंट ऑफ मी. एंड लाइक मैंने शायद पॉडकास्ट के स्टार्ट में आपसे एक बात कही थी कि जब एक बंदे के पास टैलेंट होता है ना तो उसको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है उसको एक्सप्रेस Mm. करने के लिए, और अगर वो अपॉर्चुनिटी उसे मिल जाए ना तो उसके लिए इट मीन्स अ लॉट. एंड फॉर मी इट वाज दैट वॉइस ऑफ पाकिस्तान थिंग बिकॉज इट Right. वाज लाइक रियली ह्यूज. क्योंकि और एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दैट पार्ट वाज कि वो प्योरली मेरिट पे था. तो Mm. व्हाट अगर आपके पास टैलेंट है आप लाजमी आगे जाओगे. So that was something, it was that. तो मेरा एक्सपीरियंस वॉइस ऑफ क्रिकेट में इट वाज वेरी गुड और मैंने आई गॉट टू लर्न अ लॉट. एंड सबसे बड़ी बात कि इट वाज एन ऑनर फ्रॉम मी कि आपकी कमेंट्री आप अपने आइडल के सामने करो. इट्स लाइक कि अगर आप बैटिंग कर रहे हो और आप विराट कोहली के सामने बैटिंग कर रहे हो या बाबर आजम के सामने बैटिंग करो तो इट वुड बी एन एन अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, यू नो. सो True. मेरे लिए इट वाज दैट थिंग. और फिर उसके बाद जब आप कमेंट्री करो आप होप कर रहे हो तो कि आपने अच्छा किया और सामने से रमीज राजा इज लाइक तारीफ कर दे आपकी कमेंट्री की तो एक एक वो चीज हो जाती है कि यार नहीं, आई नो आई डिड वेल.
तो इस तरह का इट वाज फॉर मी। तो जब रमीज सर रियली लाइक माय कमेंट एंड देन ही उन्होंने सारा बोला, तो इट वाज एन ऑनर कि आप व्हेन यू सी योर आइडल प्रेजिंग यू, सो या दैट्स वंडरफुल, वंडरफुल, वाज दैट्स fascinating, नरेश, जो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, एंड आई एम श्योर दैट जो हमारे लिसनर्स है एसएनएस क्रिकेट डायरीज पॉडकास्ट में, इसको स्पेशली गर्ल्स हु आर लिसनिंग टू दिस वुड डेफिनेटली गेट अ लॉट ऑफ encouragement and boost. And just, I think people in general, not just girls, but even boys, I think when they have the talent for something, and it's important to know that talent, and then if it meets with opportunity, I think it can do wonders. So that's great, Noorish. नरेश, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, एक्चुअली दो सवाल हैं, तो उसको मैं थोड़ा कंबाइन करके पूछता हूँ कि आप व्हाट डू यू थिंक अबाउट women's cricket in Pakistan, how it has changed over the years, जितना आपने देखा है, and what are the issues that currently the Pakistani women's cricket team is facing in terms of anything, on field, off field, क्या challenges हैं? ओके, सो आई एम गोना आंसर दिस क्वेश्चन इन चंक्स। पहली बात तो वुमेन्स क्रिकेट की आपने बात की कि हाउ हैज इट इवॉल्व्ड इन पाकिस्तान। सो लुक, आई वुड से अगर आप ये सवाल मुझसे 10 साल पहले के करीब या 5 to 7 years पहले पूछ रहे होते तो मेरा आंसर शायद थोड़ा डिफरेंट होता। बट अभी अगर आप इस टाइम पे पूछें तो आई वुड से कि यस, पाकिस्तान में वुमेन क्रिकेट हैज इवॉल्व, लाइक पॉजिटिवली इवॉल्व, बिकॉज हम ब्रेकिंग बैरियर्स का पूरा एक वो आया है। फिर हमारे पास डिफरेंट आए कि लेवल द प्लेइंग फील्ड। अभी जैसे हमारे जब रमीज राजा वाज द चेयरमैन तो उन्होंने इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस कराया था, दैट वाज द विमेंस लीग, हम्म, पीएसएल। उस वक्त उस सीजन का जो इट वाज आई थिंक लास्ट ईयर पीएसएल 8 के अंदर ही इट वाज इंट्रोड्यूस, इट वाज द वुमेन्स लीग। इन्होंने रमीज राजा ने इंट्रोड्यूस कराया था, व्हिच वाज एन अटेम्प्ट कि पीएसएल का जैसा ही एक लीग जो है वो विमेन के लिए पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस की जाए। तो हम्म, उसमें हमारे जो स्टार्स हैं, वी हैव बिस्मा मारूफ एंड देन फातिमा सना, और ये जितने भी हमारे अच्छे स्टार्स हैं मतलब क्रिकेट के, विमेन क्रिकेट के, उन लोगों ने अपने टैलेंट इसमें पोर्ट्रे किया था। ऑब्वियसली उसमें डिफरेंट टीम्स थे, उन्होंने आपस में खेला था, सो इट वाज अ गुड इनिशिएटिव। तो अब ओवर द इयर्स पाकिस्तान क्रिकेट वुमेन के लिए इट हैज बीन इवॉल्व्ड। और अभी रिसेंट अब आप सबसे बड़ी एग्जांपल तो उसकी देख लें, वॉइस ऑफ पाकिस्तान की, उसमें वी हैड women टू, वी हैड men टू, और ऑब्वियसली मेरिट के बेसिस पर दोनों को इक्वली जज किया गया था। सो यस, आई वुड से women क्रिकेट हैज इवॉल्व्ड, क्योंकि और अभी वी हैव organizations like खेलो क्रिकेट who do समथिंग आउट ऑफ द ब्लू, लाइक जिसमें ऑब्वियसली मुझे भी चांस मिला था लाइक एज अ प्लेयर खेलने का। तो खेलो क्रिकेट की मैंने आपको एग्जांपल दी। देन वी हैव डिफरेंट अपॉर्चुनिटी। फिर हमारे जो एकेडमी से, मैं सिंपल सी बात करूंगी, हमारी क्रिकेट एकेडमीज के अंदर भी इतना चेंज आया है कि हमारे पास अब वुमेन भी उतना इक्वली आगे बढ़ चढ़ के क्रिकेट में हिस्सा लेती हैं जितने मेंस लेते हैं। और अभी अगर 5 से 10 साल पहले देखा जाए तो शायद ये चीज नहीं थी, क्योंकि एक बहुत ज्यादा एक डिलेमा था कि विमेन समझा जाता था कि यार क्रिकेट इज ओनली अ मेंस गेम और लड़कियां नहीं कर सकती, तो right, उसमें फिर आगे बढ़ के नहीं आता था। और फिर उस वजह से व्यूअरशिप की हम बात करें, विमेन पाकिस्तान विमेन विमेन क्रिकेट की व्यूअरशिप की बात करें, तो अगर मैं उसकी भी बात करूं तो वो भी ओवर द इयर्स काफी इवॉल्व हुई है, बिकॉज अब विमेन के जो क्रिकेट मैचेस हैं वो भी उतनी ही हम्म, मोर और लेस उतनी इंथुजियाज्म से देखे जा रहे हैं जितनी मेंस के देखे जा रहे हैं। तो right, यस, इट हैज इवॉल्व्ड विद इनिशिएटिव्स। बोर्ड ने काफी लिए हैं, उसमें बोर्ड का भी आई मीन काफी रोल है देखा जाए तो, क्योंकि अभी रमीज राजा जब चेयरमैन थे तो उन्होंने अभी रिसेंटली में मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विमेंस के लिए काफी किया है। ये हमारी क्या कहते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो हमारी नेशनल टीम के लिए जो क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया होते हैं उसमें हमने देखा अभी, बल्कि हमारी मुल्तान सुल्तान्स की जो जनरल फ्रेंचाइज है उन्होंने अभी इनिशिएटिव्स निकाला है, फिर डेयरी मिल्क ने इनिशिएटिव निकाला है विमेन क्रिकेट को, जो हमारी जो लड़कियां आगे बढ़ के क्रिकेट में आना चाहिए उनको स्कॉलरशिप्स देने का, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का। वी हैव रूज मुमताज हु इज आल्सो वेल नोन कमेंटेटर क्रिकेट, वो भी हमारे इनके लिए काफी आगे बढ़ चढ़ के शी इज वाउचिंग एंड डूइंग इट। सो या, इट हैज इवॉल्व्ड एंड इट हैज grown over the years. and, And the second question that you asked is about the challenges women faced in Pakistan. So see, I would say yes, it has evolved positively women's cricket, but obviously I wouldn't say 100%, क्योंकि see अब कहीं ना कहीं ये बात अगेन आ जाती है कि क्रिकेट को कभी ना कभी कहीं ना कहीं 5 to 10% भी अभी भी
मेंस डोमिनेटेड गेम समझा जाता है, इसमें कोई वो नहीं है। आज भी अगर आप एक किसी महफिल में जाएंगे और आप किसी एक मैच चल रहा होगा और देयर वुड बी अ वुमन एंड अ मैन हु सिटिंग, एक लड़की और एक लड़का अगर बैठे होंगे, सही है, तो अगर आप उस लड़के को ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेंगे कि उसको ज्यादा पता है क्रिकेट का एज कम्पेयर टू दैट गर्ल। सो हम्म, ये एक चीज है जो एज अ सोसाइटी है अभी भी, हम्म, but I think this is something that needs to, I think it will get better with time, because 5 to 10 years से अब तक का अगर time देखें तो yes, it has evolved positively, I would say. wonderful. And I'm sure that ये this conversation, in any little way, even if 5%, 10%, it goes to the right people who are in charge of making decisions. Hearing you, I think they will also notice the fact that women's cricket now is no less than men's cricket, and I think in maybe in Yes, some countries, in fact, it's even more powerful than men's cricket. You know, if you look at yeah, exactly. some साउथ अमेरिकन कंट्रीज दैट आई नो, फॉर एग्जांपल ब्राजील की बहुत ही अच्छी अब एक विमेन्स क्रिकेट टीम बन गई है, एंड मेंस क्रिकेट का अभी तक उधर कोई आइडेंटिटी नहीं है. सो देर आर मेनी सच कंट्रीज जहाँ पे विच आर नॉट सो ट्रेडिशनली क्रिकेटिंग कंट्रीज, बट वहाँ पे women are playing a leading role. So I think that's Exactly. thing. Yeah. पर And I think आप yeah. आई थिंक इस पे एक चीज मैं ऐड करना ये भी चाहूंगी कि जब ऐसा होता है तो आप उनको इनिशिएटिव देते हो, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी रिसेंटली डेयरी मिल्क ने इनिशिएटिव लिया है स्कॉलरशिप्स देने का, कैडबरी ने इनिशिएटिव लिया है स्कॉलरशिप्स वगैरह देने का विमेन को, कि वो आए आगे बढ़े क्रिकेट खेलें। तो इससे क्या होता है कि मोटिवेशन आती है कि नहीं यार, वी शुड गो, हमें इनिशिएटिव्स मिल रहे हैं तो वी शुड, लाइक अब इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ एज अ पर्सन, अगर मुझे कोई इनिशिएटिव मिलेगा, Mm. दिखेगा कि यार मुझे यहाँ अपने मुझे मौका मिल रहा है यहाँ पे अपना टैलेंट वो पोर्ट्रे करने का, तो ऑब्वियसली आई वुड गो देयर। अब जैसे खेलो क्रिकेट, इट्स प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज, टेबल क्रिकेट अभी वुमेन की कराई है इन्होंने रात को, तो Mm. मतलब रात के टाइम पे मैचेस थे एंड स्टफ, बट इट वाज वुमेन, सही है, तो अब उसमें एक चीज भी हो जाती है ना कि जाके खेलना एंड स्टफ, तो दैट इज समथिंग आई थिंक शुड हैपन एंड इट इज हैपनिंग। Great, great, wonderful. Now, Nourish, going forward and taking the interview forward to your favorite moments from cricket. जैसे आपने बताया आपको that the one moment was the India-Pakistan semi-final. I say if you can talk about one or two other favorite moments of yours in Pakistan cricket. I have a lot. It's not just limited to Pakistan cricket, by the way. Okay. पूरे Okay. क्योंकि है वो Great, like great. Yeah, I mean, in general, yeah. okay, so I would say I don't know if you were a huge fan of that match as an Indian or not, but it was 152-0 for me, Pakistan versus India. The Yeah. one that the match in which Babar Azam and Rizwan were like uh, exceptional in that field. It was क्योंकि वो मैच हम लोग उस मैच का मुझे आज तक याद है कि जो हाईज एंड लोज आए थे जब पाकिस्तान बॉल कर रहा था एंड शाहीन अफरीदी ने, आई स्टिल रिमेम्बर द कमेंटेटर सेइंग they cannot play him, he's an absolute fire, and that point was like the game changing, Nasir like Hussain was the it was, commentator. Yeah. yeah, Yeah. one was that, and one was that match जिसकी आज हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, which was the CT17 final, Hmm. जिसमें मोहम्मद आमिर was like on fire and that बुमराह ने जो नो बॉल करा दी थी, देन फकर जमान ने 114 इन रन्स की इनिंग्स खेली थी, Yeah. एंड देन उसके बाद मोहम्मद आमिर ने आके उस पे कर दिया, देन शादाब खान का मुझे अभी तक वो याद है जो उसने रिव्यू लिया था, एंड देन उसके बाद वो उन्होंने कहा था कि इट्स नॉट, बट ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि इट इज आउट। सो दैट CT17 का फाइनल जिसके आज एनिवर्सरी भी बना रहे हैं, बिकॉज इट वाज 22nd रमजान इस्लामिकली, तो या आज Okay. आज के दिन ही भी won that, yeah. Yeah, वैसे सीटी if you look at 17, the normal Western calendar, it was in June, I think that it match. was in June, yes, but Islamically it was 22nd Ramzan, तो Okay. आज 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 was 22nd Ramzan, तो उसके आज देखा जाए तो Oh, it was wonderful. CT7, yeah. Okay. तो हम लोग उसकी आज दैट, एंड देन उसके अलावा हमारे पास एक मैच था जिसमें आई वाज वेरी, अभी लास्ट ईयर का जो वर्ल्ड कप था जिसमें ग्लेन मैक्सवेल वाज 200 प्लस नॉट आउट Yeah. अगेंस्ट अफगानिस्तान, and that match was like, man, this team is outstanding, and I was a huge fan of Australia at that time because Glenn Maxwell की जो resilience थी उस मैच में, I was like, what is this guy? And ग्लेन मैक्सवेल को सब वो कर तो रहे थे कंग्रेचुलेट, बट आई थिंक उस मैच के अंदर पैट कमिंस का भी उतना ही रोल था, बिकॉज ही स्टेड ऑन द नॉन स्ट्राइकर्स एंड ही जस्ट प्रेफर्ड कि वो ग्लेन मैक्सवेल को स्ट्राइक दे, और उसने उस चक्कर में अपने रन जो है वो रोक के रखे, ही प्लेड फॉर दैट टीम।
So yeah, on that note, that was one match. और फिर second एक वो था last year Ashes के अंदर, it was Ashes series test series के अंदर, it was Birmingham के अंदर वो match हो रहा था, and I still remember it very clearly. 2023 Ashes series test match, test series के अंदर it was basically Australia और वो जिसमें Pat Cummins won on strike और they needed 20 runs to win and was last wicket, जिसमें I remember कि Ben Stokes ने कैच भी छोड़ दिया था, and that Yeah. जो कैच उसने वो छोड़ा था उसके बाद इंग्लैंड lost it, and I was supporting England at that, उस Mm. दिन I was supporting England. तो Mm. ऑस्ट्रेलिया को चाहिए थे 20 runs and इंग्लैंड को चाहिए थी 1 wicket, Mm. but Australia won that match. Yeah, yeah. I think maybe we can check the records, but as far as I remember, I think they needed 2 wickets. But anyway, that doesn't matter. But yes, the Yeah, catch. they needed 2 wickets. They Hmm. needed 2 wickets, but I think it was एक उसमें गिर गई थी I think. Then Hmm. उसके बाद 1 wicket चाहिए थी बिल्कुल एंड में, Okay. एंड की बिल्कुल. Yeah. Yeah. So yeah, I think that's amazing. आपने जो especially जो 152.0 loss बताया है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा नरेश that we as Indians obviously we were disappointed on कि वो हमारा streak जो था World Cups में वो टूट गया, but and now Yes. we say that at least 50 overs में तो we are still Pakistan is still to defeat Yes. us in the No, World Cup. no doubt. But I Undoubtedly. think more than the defeat, I'm sure good, like people with good cricketing knowledge would say that what was more disappointing for an Indian was the lack of fight because losing by 10 Yes. wickets when you are defending one. It's not that we were defending only 90 or 100. We were defending Yes. 150. So in a T20 match, 150 means कि आप थोड़ा बहुत भी लड़ोगे तो at least आप 4-5 विकेट Exactly. लेके लड़ो. But yeah, so I think as a whole match में excitement नहीं था इतना as an Indian, but yes, I can Yes. assume that as a Pakistani how much excitement it was when both Babar and Rizwan were playing because obviously first time you were about to defeat India in a World Cup. So that I think जैसा match हमने second उसके बाद के next T20 World Cup में देखा था which India won in that match. But what was good Yes. was that the excitement was, I mean, the match was so close and keenly contested. That was what Yeah. I think many times एक इंडिया पाकिस्तान मैच में जो हाइप होता है स्पेशली इन वर्ल्ड कप और वो हाइप में व्हेन इट डजंट लिव अप टू दैट हाइप जैसे पिछले साल का 2023 वर्ल्ड कप Yeah. मैच आई थिंक एज एन इंडियन I don't think so. we even I didn't, but I mean of course I enjoyed that time when we were defeating them, but then it's not a match कि आप बाद में जाके highlights देखोगे बहुत बार because it is not something that really makes you feel excited. इससे ज़्यादा excitement तो I think was the India New Zealand match, league match था Yes. जो this which was much more tight and so many other matches like even you say like Afghanistan Australia Yeah. match was so close. So yeah. Yeah. It was Anyway, close. But it yeah. wasn't one of my favorites because it was one of my favorites because in a sense के जब वो it was the semi-final 2021 World Cup semi-final against Australia कि जिसमें Yeah. शाहीन अफरीदी got beat out for जिसमें मैथ्यू वेट ने I think बहुत exceptional innings खेली थी. It was a good match but we lost at the end. So as a fan वो it. it was very heart-wrenching. Yeah. आई थिंक अगर Right. हम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के हिस्ट्री के बारे में बात करें तो दैट itself is a very very different episode that we can come out with and that can go on Yeah. for because आई थिंक जो जो एक हार्ट ब्रेक्स पाकिस्तानीज ने ऑस्ट्रेलियंस के हाथों ले आए ओवर द इयर्स एंड आई एम गोइंग लाइक वे बैक Yes. probably you were not even born that time. I'm talking about like 1999. There was a match at Hobart where it was Gilchrist's second match. So, I mean, anyway, Pakistan was in a very good position and then they lost. So, yeah, I think over the years, Pakistan, Australia have given some wonderful matches. Even 1999 World Cup ka group match. And even there are matches which Pakistan has won against Australia in World Cup. So, those have been wonderful. So, Yeah. yeah, I mean, there are moments to cherish and moments to feel sad. But Yeah. these are the moments which make the sport of cricket so beautiful, isn't it? Yeah, exactly. And ऑस्ट्रेलिया से तो हमेशा से इट्स बिन कि मतलब जब मैच आता है तो इट्स लाइक खुशी से ज्यादा थोड़ा डर लगता है बिकॉज एज अ फैन आई एम टॉकिंग अबाउट बिकॉज अभी हमारी मुझे अभी याद है अभी रिसेंटली हमारी अंडर 19 की टीम जो थी वो इट वाज Yes, गोइंग yes. अनबीटेबल That was राइट a very close सो match also. या वो अब फिर वो आई थिंक सेमीफाइनल वो था जिसमें हमारी टीम गई थी Yes. अंडर 19 टीम गई थी और इट वाज वेरी क्लोज मैच Yeah. उसमें भी हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे तो विद And ऑस्ट्रेलिया आई मीन एंड इट आई मीन इफ यू लुक एट इट अगर आप थोड़ा क्रिकेटिंग टर्म से बात करो तो ऑस्ट्रेलिया हैज ऑलवेज बीन अ बैलेंस साइड एंड नॉट बिकॉज वो कोई भी प्लेयर्स चूज करेंगे ना तो उनकी उनके माइंड में उनकी स्ट्रेटेजी क्लियर होती है दे yeah. नो हाउ टू हैंडल प्रेशर वेल दे नो
how do cope up with conditions के जो stressful conditions होती हैं या जिस जो ऐसी conditions होती हैं जिसमें मतलब जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, इट्स एन ऑल प्रेशर गेम एंड आई पर्सनली बिलीव कि इंडिया पाकिस्तान मैच के अंदर स्ट्रेटेजी आपकी मैटर करती है, नो डाउट, बट उससे ज्यादा जो टीम अपनी नर्व्स पर काबू पा लेती है वो टीम जीतती है। और ये हमेशा देखा गया इंडिया पाकिस्तान मैच के अंदर, आप अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखते हो, यू कंट्रोल योर नर्व्स, यू विन। 152-0 वाले केस में पाकिस्तान ने अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखा था एंड दे वन। एंड फॉर इंडिया आल्सो के इंडिया ने भी जब अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखा तो दे हैव वन। True, true, that's true. So as we head into the end of this interview, although I think Noorish, आपके साथ बात करते करते time को पता नहीं लगा, and would love to have this conversation going on for more time, but in the interest of time, I'd like to ask you one last question regarding your views on Babar Azam and Shaheen Afridi. But by the way, let me tell my viewers that ये question जब मैंने सोचा था नूरिश के लिए, तो that time the developments that were happening, which are currently happening in Pakistan, एग्जैक्टली। were not happening that time. This was sent about, I think, more than 20, 25 days ago. And now that we see whatever has happened, so maybe अगर उसको भी आप मद्देनजर रखते हुए अगर you can talk about your views, but generally this question was more about your personal views on how Babar Azam is as a batsman and how Shaheen Afridi is as a bowler. I'm glad you brought that up. About the changes that's going on because yeah. So uh, about Babar Azam, I would say कि look, I would start by saying कि as a general मैं ये बात कह रही हूँ, it's not like as a general I've always believed कि stats without impact are not that effective. So I think if you have stats, you need to have an impact too, right? So for Babar Azam, I'd say undoubtedly he is one of the best currently the best batter of Pakistan. I would say undoubtedly he Mhm. is like my personal favorite batter. मतलब मुझे I look up to him when I'm batting. I try to mimic his cover drive styles and stuff. So yeah, so Babar Azam is a good batter, but I honestly think कि अभी उसको recently they have made him the captain, right? अब he was the captain अभी World Cup में he led Pakistan and stuff, and अभी recently जो है उनको कैप्टनसी से रिमूव किया गया था जब शाहीन अफरीदी से रिप्लेस किया गया था, देन अभी दोबारा से उनको कैप्टन बना दिया गया है। तो एज बाबर आजम आई वुड से कि फॉर्म he has class, no doubt, कि मतलब बैटिंग की क्लास एंड स्टफ। फॉर्म अभी थोड़ी सी एक बैड पैच चल रहा है बाबर का, हमने देखा है काफी टाइम से वो Mhm. एक इम्पैक्टफुल इनिंग्स जो होती है वो नहीं कर पाए हैं। सो या फॉर्म अभी उनकी इन नहीं है, बट आई थिंक बाबर आजम बायलैटरल्स में ही इज एक्सेप्शनल, ही इज वंडरफुल, ही हैज मतलब broken all records, but I on a very serious note, as a मतलब as a loyal fan of Babar, I would say he needs to step up in World Cups as well. I mean, the last impactful performance in World Cups that we have seen from him was in the 2019 World Cup against New Zealand, Yeah. ODI World Cup against New Zealand. उसके बाद बाबर आजम नो डाउट मतलब हम कह सकते हैं कि और मैं एक और बात कहती हूँ, अक्सर जब भी क्रिकेट पे बात होती है तो people need to stop with the comparison between Babar Azam and Virat Kohli. For God's sake, please. They like Babar plays for a different country, Virat plays for a different country. I mean, मुझे दोनों बैटर्स बहुत अच्छे लगते हैं। विराट कोहली की अपनी क्लास है, बाबर की अपनी क्लास है। बाबर को जो फैसिलिटीज वगैरह दी जाती है उसके मुताबिक ही इज डूइंग ग्रेट, ही इज वंडरफुल, ही इज एक्सेप्शनल, और उसकी मतलब जितनी भी तारीफ की जाए कम है बाबर आजम की। Mhm. As for or and what makes it more beautiful is the journey that he's been through, the struggles that Babar has faced to get to where he is. So that guy is pure class, pure merit, Mhm. like pure मतलब I would say कि अभी currently पाकिस्तान को इंटरनेशनली भी अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट की एक पहचान हो गई है बाबर आजम। True. Everyone is like Babar Azam is like a brand currently, or and for good reasons. I've seen him bat live and it's like a feat to watch him bat. That Mhm. mesmerizing cover drive is like आप जब बैट हिट होता है कवर ड्राइव के लिए, लाइक ओ बस खून हो गया जब बाबर आजम की सेंचुरी होती है स्टफ। एज फॉर विराट कोहली, आई वुड से दैट गाय इज लाइक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। आई वुड से बाबर आजम टू, बट विराट कोहली इज डिफरेंट, बाबर आजम डिफरेंट, दोनों का कंपैरिजन बनता नहीं है। That's विराट कोहली हैज प्लेड मोर क्रिकेट और ज्यादा साल उन्होंने क्रिकेट के लिए। बाबर आजम को विराट से कम टाइम हुआ है क्रिकेट में, बट उस कम टाइम के अंदर उन्होंने जितना कुछ अचीव किया है, दैट इज अगर देखा जाए तो दैट द स्टैट्स दैट ही हैज,
तो उसमें दैट्स एक्सेप्शनल, इतने कम टाइम में इतना कुछ अचीव करने से एक्सेप्शनल, राइट? एज फॉर विराट कोहली, आई वुड से दैट गाय हैज स्टैट्स अलोंग विद इम्पैक्ट, you know what I mean? Yeah, कि yeah, absolutely he performs in World Cups along with bilaterals, true. right? So this is something that Babar needs to do as well. Like stats तो है, बहुत है, लेकिन impactful performances थोड़ी Mm. हमें और चाहिए. For And विराट कोहली, we have seen yeah. कि उनके पास क्या कहते हैं, उनकी जो स्टार्ट्स हैं, जो मतलब मोस्ट अ लॉट ऑफ देम हैव बीन इन द विनिंग कॉज फॉर टीम इंडिया. Mm. फॉर बाबर आल्सो, बाबर के भी जो फिगर स्टैट्स एंड फिगर्स देखे जाएं, दे हैव आल्सो बीन on numerous occasions, they have been on the winning cause. I remember that match कराची में इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज चल रही थी. इट वाज इन कराची और इंग्लैंड ने आई थिंक 210 का टारगेट दिया था पाकिस्तान को. आई वॉज वॉचिंग दैट मैच लाइव फ्रॉम नेशनल स्टेडियम. Okay. उस मैच में बाबर हिट अ सेंचुरी. इट वाज अ T20 मैच. तो Hmm. या, तो वी हैव And सीन कि अब जैसे yeah. ये सिचुएशन आती है, अब हिज परफॉर्मेंस हैज एन इम्पैक्ट, Hmm. राइट? अब इफ यू रिमेम्बर द लास्ट वर्ल्ड कप, जो लास्ट ईयर का वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का जो मैच हुआ था, जिसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान लॉस्ट, Hmm. राइट? तो Yeah. लेकिन उसके अंदर तो द इनिंग्स दैट बाबर प्लेड, इट Yeah. वाज वेरी गुड कंसिडरिंग. आई मीन, वैसे Yeah. अगर हम नंबर्स के He तौर scored पे a half देखें तो, century, I think. Yeah. Yeah. yeah, he scored half century. I mean, yeah, but लेकिन जो conditions उस pitch की थी, it was very hard to score even a half century in that. So in that condition, I would say कि he knows how to play, मतलब he knows how to stabilize the team, और कब क्या कहते हैं, कौन सा शॉट करना है, कब क्या, तो in that he is good. But अभी थोड़ा सा बैट पैच चल रहा है बाबर का. बस आई जस्ट होप कि वो बैट पैच चल जाए, बिकॉज वी नीड टू सी द राइज ऑफ द किंग. बिकॉज हमारे यहाँ तो बाबर को किंग ही कहा जाता है. बाबर आजम इज लाइक किंग, और ही इज लाइक a literal brand. And very, very quickly, if you can talk about Shaheen Afridi, yeah. Yeah, sure. As for Shaheen Afridi, I would say कि obviously one of the best bowlers Pakistan have, and obviously I don't know if you know this, but he was a pick of Lahore Qalandars, और वहां से शाहीन अफरीदी जो है वो उसको पिक किया गया था. और हारिस रऊफ टू, बाय द वे. लाहौर कलंदर्स, पीएसएल के अंदर लाहौर कलंदर्स इज दैट टीम जिसके पास हिस्ट्री रही है कि वो अच्छे बॉलर्स पाकिस्तानी टीम को प्रोवाइड करते रहे. We have got Shaheen Afridi from that. We have got Zaman Khan from Lahore Qalandars. We have got Haris Rauf from that. So about Shaheen Afridi, I'd say कि शाहीन की बॉल में पेस है, सब कुछ है, बट अभी जो 2022 का वर्ल्ड कप फाइनल अगेंस्ट इंग्लैंड, जिसमें शाहीन अफरीदी गॉट इंजर्ड, Sure, yeah. उसके बाद से जिसमें आई थिंक डैनी मॉरिसन वाज ऑन कमेंट्री उस टाइम पे, एंड ही सेड सम वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स which very fast bowlers are like golden dust. So Hmm. these words were like very Hmm. nice. तो उसके अंदर आई वुड से कि शाहीन अफरीदी के उस मैच के उस इंजरी के बाद से जो कमबैक है ना, वी आर स्टिल अवेटिंग दैट, एंड आई रियली होप कि वो उनका कमबैक, क्योंकि अब पेस है, सब कुछ है, बट लाइन एंड लेंथ थोड़ी सी उनकी जो है डिस्टर्ब हो जाती है. सो Shaheen Afridi is a very potential bowler and stuff, and obviously it's like if Babar is the best batsman we have, then Shaheen is the best bowler we have right now. So दोनों का combo is really good, and I'm really looking forward to this year का World Cup, because we have Mohammad Amir, Imad Wasim, and all of them coming back. Yeah. So it's going to be a good team overall, bowling side. Yeah. Yeah, and yeah, and we hope that we have a wonderful India-Pakistan match in New York. I think that's very important. So, well, Yeah. Noorish, it's been an absolute delight to talk to you. और अगर हमारे पास वक्त होता और तो थोड़ा और बातचीत हो पाती, but yeah, such is what is podcast life. Yeah, you have to be in time, so that's how it is. But thank you so much, Noorish. And we hope that here at the SNS Cricket Diaries, this is not just a one-off. Maybe we can have some regular, talks from time to time, previewing or reviewing some key India-Pakistan matches as the year goes by, Yeah. especially the T20 World Cup that's coming up. So Yes. we'd love to have you again on the show, Noorish. So Yeah. Thank thank you. you so much. Thank you so much for being here, and we wish you all the best in your cricketing journey. Thank you. Thank you. It was so good to be here. It was Thank you, very and good. thank Yeah. you to my audience. I hope you have enjoyed listening to Noorish in this wonderful interview and insight about her cricketing journey and Pakistani cricket as well. So until the next episode, see you. Bye. Bye.